So we have already started this session and we have already done with the 2 sessions. So in the first session, what I have discussed, I have just given you an overview of what are the things that we are going to cover in the next 3 months' time. So I have shared a detailed session agenda with all of you. So most of you are present there. In the last session, what I have done, I have discussed about a brief history of the how Python has evolved, what is the history, background, and evolution of the Python and the major version of the Python that has came in this world, and what is the latest version of the Python that, and we have talked about, we will be studying Python 3 in this entire session that I have discussed. After that, I have given you features and functionalities of the Python. What is Python? Why Python is different from any other languages? These all things we have discussed. And lastly, what we have done in the last session, we have done the setup part. That is, we have installed Anaconda, Miniconda on our system, on our respective system. And then we have tested it, whether it is working or not. Then we have downloaded the Visual Studio Code, which is a integrated development environment where we will be working from the very day one to the project till we will be doing the project. So that we have done. So we have completed all the setup part in the last session. So today is the actual beginning of the session where we will be starting with the very basics of Python. So this is just a brief idea. So those are, I suppose I have already, we have uploaded these sessions. So any one of you who have not received mail, you can just contact Mr. Sachin Mittal. He will be looking after all those things. So he will make sure that you will get the link so that you will able to watch whenever you want. If let's say some of you want to revise it, you can just go and watch the videos and revise the sessions. If you will go to the description section of the videos where I have uploaded, you will also get a download resources link where I have attached the GitHub resources link. From there, you will get all my class notes, all the source codes, and we have created a separate assignment sheet also. So I have attached the assignment link also there. So you can have everything access from from one point. If you want to show me, definitely I will show you at the end of this session. So these are all the things. These are the general things that I wanted to tell you. Now, let's actually start with this session. Since we have already done with the setup part and all those things, so directly I will jump. I will open my Visual Studio Code and you should open your Visual Studio Code. And as I have already told you, the sessions that I will be conducting, it will be completely hands-on session. It means you are not allowed to sit there ideally and watch the video. You are supposed to type along with me. And believe me, coding is nothing, just a typing game. If you keep typing, you will understand each and everything slowly and progressively. Some of you may find a little difficulty, but I will make sure that I will make you understand the things from the very scratch, because this I have framed the entire course in a way so that if some of you who have not even done a single coding in your entire life, and this is the first language that you are going to study, I will make sure that you will do it. Fine. So I'm going to share you my screen and we will start coding. So fine. Let me share my screen first. Okay. So I suppose, are you guys able to see my screen? Am I getting quick yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So one more thing that I would like to tell you, that usually what happens that when I start teaching, so it's very difficult for me to go on and read the chat in the chat box, what you people are messaging. So it's better
that you keep yourself in the mute mode. Whenever something you face any problem, you want to ask any question, just unmute yourself and directly ask the question. This is the best way, since because we are keeping the batch size very small, so it will not be a problem. Only make sure that if someone is speaking, don't speak. Let him finish first and then speak. This is only the request from my end. Rest, everything is fine. So let's start. तो हमने क्या किया था, एंड आई विल कीप द मीडियम इंस्ट्रक्शंस मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट if any one of you will be comfortable not in English, then let me know. I will adjust my language and speed and everything accordingly. Is it fine? See, मैंने क्या किया अभी लास्ट टाइम, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे हमने सीख लिया था कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या होता है, ठीक है। और ये मैंने डे 0 हमने फर्स्ट किया, डे 1 किया, आज हमारा डे 2 है। अभी डे 2 फोल्डर को मैं ओपन करता हूं और इस फोल्डर में जाके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। जस्ट अगर आप इस ऑप्शन के पास जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल, देन न्यू फोल्डर एंड देन रिफ्रेश एक्सप्लोरर। तो मैं अभी एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड इस फाइल का मैं नाम देता हूं syntax. Just you can give any name, or I am just giving the name episode coding 1 dot ipyn. This is the name of the file that I am giving. अभी मैं आपसे लास्ट टाइम बात किया था कि हम लोग दो तरह के फाइल्स के ऊपर काम करेंगे, ipynb एंड डॉट पी वाई। तो इनिशियली भी हम लोग डॉट पी वाई फाइल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डॉट ipynb फाइल काफी इंटरेक्टिव होता है, तो स्टूडेंट्स को समझना और समझाना थोड़ा आसान होता है वहां चीजों को। हम इसलिए हम लोग ipynb फाइल का इनिशियली यूज करेंगे। तो मैंने एक ipynb फाइल क्रिएट कर दिया। आप अगर एंटर की प्रेस करेंगे या सिंपली क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो गया। क्या आप देख रहे हैं? ये फाइल अभी क्रिएट हो गया। इज इट फाइन? अभी जैसे ही होगा आपको दिखेगा यहां सेलेक्ट कर्नल। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक है, एंड जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मुझे ये दिख रहा है पाइथन इन्वायरमेंट्स। तो मैं पाइथन इन्वायरमेंट में जाऊंगा और सेलेक्ट पाइथन, मैं एक कोई भी इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहूं तो यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी बना सकता हूं, बट अभी मैं नहीं करूंगा। अभी मैं एग्जिस्टिंग मेरे पास जो भी इन्वायरमेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल यूज इट। फाइन। तो सेलेक्ट कर्नल, पाइथन इन्वायरमेंट, दिस थिंग, फाइन। अभी क्या है, अगर आप देखते हो तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, यू विल लुक हियर, देयर इज ए dot with a white symbol. So what does this mean? It simply means that whatever changes I have made, I have not yet saved. मैंने अभी सेव नहीं किया। तो इसका तरीका सबसे ये है, आप विंडोज पे हो तो कंट्रोल एस प्रेस करोगे। मैं मैक यूजर हूं, मैक पे हूं, तो मैं कमांड एस टाइप करूंगा। तो मैंने कमांड एस जैसे ही टाइप किया, ये देखो व्हाइट डॉट चला गया, मतलब जो भी चेंजेस अभी मैंने किया वो सेव हो गया। अभी इसके बाद यहां आप देखो, यहां पे दिस इज अ कोड, दिस इज मार्क डाउन, दिस इज रन ऑल, दिस इज रीस्टार्ट, दिस इज क्लियर ऑल आउटपुट, एंड at this point of time these two things are, only this thing is important for me. What this thing is? This is a code cell. So if I just press here, can you see here plus is there? You will see this is a one cell. If I just press here, one another cell is added. If I keep on pressing, the number of code cells is keep on adding here. If I just come here, and here can you see, here is the option of delete cell. If I just click here, if I type something, let's say here, and then if I, just for your understanding, if I came here and I press here delete cell, everything get delete, this entire cell will get deleted. If you can see, this is, let's say this is my this cell, and there is two things here. This is pointing towards upward direction and this is pointing towards downward direction.
So if you want to execute any cell that is above it, you have to press this. If you want to execute any cell which is below this, you have to press this. And let's say if you want to insert any cell that is above this cell, if you want to insert any cell that is above this cell, so what you have to do, this is a three dotted point. Can you see? So I will click here and I will go to insert cell, and then I will select this option, insert code cell above. You will see one code cell is added above this code cell. Fine. Let's suppose I want to add one code cell below this. I have just written this text here so that you may able to understand that if a code cell will be added in between, it will be visible to you. So what I'm doing here, I'm just clicking on this three dot, and thereafter I'm going to the option of insert cell and insert code below. If I just do this, can you see one code cell is added in between the two? This is just a basic thing that I wanted to make you understand at this point of time. Fine. Now, let's write our first program. Fine. So how can we write how can you write the first program? The first program that you write here, let's write it something, anything. Let's say I am writing print. And thereafter, inside the quotation, double quotation, I am writing AI, welcome to AI की पाठशाला. Fine? So if I will add this and I want to run this, so there are two. So at this point of time, I ask you to just, can you see this button, triangle kind of thing at the left hand side? So if you just press here, after writing this, you need to save it. So let's save it. I'm saving it by Command S. You can save it by Control S. And thereafter, if I just run this, I can see this cell is the code cell here, the code that I have written here. This is a very simple, and the first code that we have written has been executed, and I'm seeing this output, welcome to AI Ki Pathshala. So you have understood how to run the code? Fine. Now, let's talk about something more, the basic things. Now, so I hope you all have enjoyed the first session. Now, in this session, the first thing that we are going to learn is called syntax and semantics. Syntax and semantics. So let me just open my this thing also so that I'm able to write it where to use this thing. Give me a second. I'm for the purpose of writing, I'm just doing some thing. If I want to write it here, and I try. So I'm stopping the sharing of a screen for a while just to fix one issue because my tab is not getting connected. So, so okay. Okay. So I have given this. Okay. I got it.
I have enable annotation for this. Actually, I have disabled the annotation part. That's why my tab was not working. So I was just surprised at why it was not working. So fine. Now everything is fine. So let's move. Fine. So see, what is the syntax? So you can think of this syntax as a grammar rule. Grammar. This is just we read the grammar rule in English. Similarly, we have certain rules which we used to understand in this Python programming. The first syntax is called indentation. So let's understand what is this indentation. I'm writing it here, indentation. So this indentation is, what is this indentation? So indentation is, you can understand it. It is basically, this indentation part is the most distinctive feature of Python, is to define the indentation to define a code block. Indentation to define a code block. So whenever we write a code in Python, we used to define some kind of indentation. Now, this is very different from other programming languages, many other programming languages which use this curly braces. If you are aware of some other programming language, you will see this type of curly braces, which is used to give the indentation. But in Python, this type of indentation is not used. This is something very unique to Python. And why this is unique? Because it is not just for the readability of the code. This indentation is a fundamental part of the syntax. Fundamental part of syntax. Fine. Now let's understand what is this indentation and the rules of the indentation. So what it means, let's say if I write one code, if true, and I'm going here, colon, and then if I am just pressing the enter key, can you see this space? It automatically, this space is coming and my cursor is coming here. Let's put my cursor here, and when I'm pressing enter key, automatically, instead of starting from this point, now my cursor is at this point. So this space is called indentation. So it automatically takes the indentation when I press the enter key. So, and after that, let me write something. Let's say I'm writing here something. Let's print, and this is indented. This is indented. Indented. Fine. If simply I am writing this, and if I will run this code, you will see I get a statement, this is indented. Now let's talk about this thing. Now, let's talk about this indentation first. So this indentation is basically, the space that you are seeing here is basically 4 spaces or a single tab. Single tab. What I mean to be 4 spaces? That means, it simply means, let's see, if I will just, what I am doing, I am putting it here. So if I will press my space bar 4 times, 4 spaces means 4 times if I press my space bar, एक बार मैंने प्रेस किया, फिर दूसरी बार प्रेस किया, फिर तीसरी बार प्रेस किया, फिर चौथी बार. So this 4 space gap is my indentation. और ये ऑटोमेटिक होता है. या तो आप 4 स्पेस गैप यहाँ पे दे सकते हैं, स्पेस पास करते हो 1 2 3 4,
या नहीं तो दूसरा तरीका है, सिंपली इफ यू विल put your cursor here and simply if you will press tab, it will automatically take single tab. मतलब एक बार आपको टैब प्रेस करना है, it will automatically take the four space, ये four space, and this four space is basically called indentation in Python. I suppose this thing is clear. Now, why important thing is here, why indentation is needed. So indentation is, I will keep on writing the things here so that whenever you will go through this code, you will have this understanding also. So indentation is basically, indentation is used to define blocks of code, blocks, blocks of code that belong together. That's why we need indentation. Now, let's see what I mean to by the block of code. If let's say I'm writing some code here, if this is not a code, this is just for your understanding, I am writing here, if this is a condition, I am writing, and I am writing certain code. Let's say I'm writing one statement, pressing this, and let's say I'm writing statement 1, then I am writing statement 2, fine, and let's say let's don't put a fine, statement 2, and then if I am writing something like, let's say ELSE, don't confuse by this if else, we all will discuss all these things in the future. Here my purpose is to just make you understand this indentation thing, fine, and here I am writing some statement 3. Let's see. So if you will look at this code, what is there? Yeah, Hirak sir, please ask. You have raised your hand. You can directly unmute yourself and ask question. There is not an issue, sir. What is the use of this colon here? Okay. This colon? Yes, this colon. This is starting of the block? Yeah, this colon is... When I don't use it, it comes without indentation. Yes. So this is basically starting. अभी वही मैं बताने ही वाला था आपको next चीज. This is basically the starting of a code block. Indentation means starting. So it's a, in other language, it's a starting of curly braces, no? Correct. In other languages, just like as I have already told you, here we do not use curly braces. Instead, here we use colon. Yes, and we use indentation. Instead of the curly braces, we use indentation. Fine. So this is one code block. If you look at this, this is basically my one code block. And this is basically my another code block. So this colon is the start of my first code block. Inside this first closure, there is something, I have something written, statement 1, something written. And inside this code block, here, this is the starting of this code block. And if you will look, here also this is indented. Here also this is... So if I need to use nested if here, okay, if under if... Sir, I will be coming... Again, I need to put colon in... Sir, I will be coming to all those things. Don't worry. Okay, okay. I will be coming to, because we were going from very simple to complex things. That's why. No issues. Fine. So this is, if you will look at, this is the indentation. This is a indentation. This is a indentation. What it means, if you see statement 1 and statement 2 are at the same indentation level. If you see, if I write something here also, statement 4, let's say, so this statement 3 and statement 4 will be at the same indentation level. And let's see one thing, if you observe here, if you observe one thing here, if you observe this thing, my if, this if, and this else,
both are at the same indentation. Can you see? This if and this else is at the same indentation. These two and this thing is at the same indentation level, just to make you understand this. Now, let's understand what it means. If let's say a body of the function, if since you do not know right now function, that's why when you will understand, I will be writing the function, then you will understand all those things. Fine. So this is one example. Now let's take another example. Here I have done a simple thing. Now here I am writing some nested blocks. What is this nested blocks? You will understand. Let's write it here. So instead of this, let's simply do one thing. If I write here, if I'm putting some condition, fine, and thereafter I'm putting this colon. So now what happens? One code block starts here. Now again, it has, as soon as I pressed enter key, it has taken the indentation. Now I am writing another condition. Let's say if condition 2. Then if I am pressing it, then hereafter I am writing, let's say statement, let's say 1. And now if I am pressing it here, and here in the else part, I am writing statement 2. Statement 2. Let's write it. And then here, let's write ELSE, else, and statement 3. Statement 3. Fine. Now, so you can have blocks within a blocks. Are you getting my point? We can have a blocks within a blocks. So see, this is the start of my first block. What? Anyone want to ask something? Okay. So this is the start of my first block. Now, when I am entering my first block of code, there is a second colon, there is second if statement. So this is a block of code inside the block. This is my main block, and inside this main block, there is another block of code. So this type of thing, and here if you see, if statement, this if statement is this else statement, and this if statement belongs to one block of, this belongs to one block of code. If you look, this statement 1 and this statement 2 is at the same indentation level. Now, this if statement and this else statement is at the same indentation level. So this is another block of code. Here, statement 3 and statement 2 and 2 is not at the same indentation level. They are at a different indentation level. This type of thing is called looping, nested loop. This is called nested loop inside a loop. We will be studying these things in details later. But here, just for the sake of your understanding, I have explained you just to explain you this indentation thing. So here you can see nested. We have used indentation. We can create blocks within a block. We can create blocks within a block. For that, we used to do the indentation. Now, if you understand, this is a 4 space gap. Fine. But this is my 8 space gap. This is 8 space gap. Space or 2 tab. That means you have to press the tab twice. This is also 8 space gap. This is my 4 space gap. So this is an indentation that you need to follow. Now, there are certain common indentation errors that people used to do.
So let's, Just one query. yes, ask, please. You told that this if condition and the else part, this is a block, Yes. correct? So, is the block getting started from semicolon, or is it can start from if or the indentation or any other like statement? See, this block is starting after semicolon. Not, this is not a semi, is this a semicolon or colon? I suppose semicolon is something like this. So this is, Yeah, I mean colon. yes. So it is starting from colon. अभी देखो आप, ये फर्स्ट ब्लॉक है, तो यहां से हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है, एंड हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एंड कहां हो रहा है, यहां हो रहा है. दिस इज माय, सॉरी, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉक. But inside this, there is another block of code. Let me write it in. This is my second block of code. Are you getting my point? Yes. So inside this block, we have another. So whenever we are starting a new block inside a block, we are putting colon here. Then followed by statement and whatever thing that we are writing. This is just for the sake of understanding indentation. Don't worry about these things. Okay. So Why? like for starting something, like indentation is always required, or we can skip the indentation? No, indentation is required. Okay. Indentation is always required, that we will see. See, Okay. what And I'm giving you. just Yes. yeah, just one more question. Like, will all the block start with if and end with else, or No. This is just for the sake of making you understand. This is nothing. This is just okay? for the sake of, it can start with lot of things. Okay. So we will discuss that things. Yeah, thank you. Thank you. So say if, let's suppose, if indentation is not consistent, then Python will throw you an error. And that error, Python will give you an indentation error. So let's understand. I'm writing one code, if true. This is a code, simple code. And I want to print, let's print this thing like this is indented. This is indented. Fine. Now, see, whenever I am pressing my enter key here, automatically my cursor comes here. That is, it automatically is taking the 4 indentation space. Can you see? Now, instead of this, I am just pressing the cursor behind it and writing something like I'm writing one print statement. And here I am writing one code. This is like this will cause indentation error. CAUSE cause indentation error. Indentation error. Fine. So it should be here, but what I have done, I have just it here. Now, if I run this code, let's see what happens. Can you see what error I am getting? Unindent does not match any auto indentation level. So this is giving you an indentation. And where the error is coming? Error is coming from this, because this is not properly indented. कहते से ये print statement और ये print statement should be at the same indentation. Since I'm not maintaining a proper indentation, I'm getting this error. Have you understood this? Now, so what it means, if you will get an indentation error, it's like getting a ticket from the code police that you have not parked your code at the right place. So you should park your code at the right indented place.
This is what it means. Fine. I think some voice coming. Someone is unmuted. Yeah. So हेलो yes, yes. सर, मैं इंडेंटेशन पे ना, मैं प्रिंट को जस्ट इस नीचे लिखता हूँ, तो भी क्या इंडेंटेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? क्या क्या आप कह रहे हैं? सर मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं प्रिंट को जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ, तो भी क्या इंडेंटेशन इफेक्ट करेगा चीज? प्रिंट को इफ के नीचे लिखते हैं? हाँ, फर्स्ट प्रिंट जो आपने फर्स्ट प्रिंट लिखा है, उसको हाँ, जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ मैं। ये ये इफ ट्रू लिखा, इसके बाद सर मेरे हाँ, को आप एक एक मिनट दे दीजिए, हाफ मिनट। मेरा कोई बेल बजा रहा है, मे बी कोई फूड लेके मेरा आया है। जस्ट मैं आई एम कमिंग इन बैक इन 10 seconds। Pratik, I think your mic is open. Pratik. Hi, Pratik sir. Hi, Pratik. सॉरी गाइस, Hello. सॉरी गाइस, आई हैव कम। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप कि अगर मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखता हूं और इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, यही कह रहे थे आप, ट्रू लिख के फिर मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूं। हेलो Rahul. हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये अभी ऑटो इंडेंटेशन ले लिया इसने यहाँ पे अभी, हाँ, आपने एंटर किया। मैं कह रहा हूँ, यदि ये इंटेंडेशन इसके नीचे लिखूं मैं, तब भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? किसके नीचे लिखूं आप? इसके नीचे। इफ के नीचे? हाँ। मतलब ये ट्रू आप कह रहे हो हटा दूं? नहीं सर, ट्रू लगे रहने दो। अब जैसे आपने एंटर दबाया यहाँ से, हाँ, एंटर दबाते ही आपको नेक्स्ट इंटेंडेशन के साथ आपके साथ यहाँ पे प्लेस हुआ। ठीक है। मैं ये इंटेंडेशन यूज नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूँ इसके नीचे। ये आप ऐसे ऐसे यहाँ पे कर्सर है, अभी हाँ। आप लिखना चाह रहे हैं। हाँ, तो भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो अभी ये इंडेंटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, लिखिए, लेट से प्रिंट लिखते हैं। आपका नाम क्या है? बच्चे बोल मार रहे हैं, राहुल। मम्मी से बोलना राहुल। जरा। ये राहुल लिख दिया। ठीक है। और देखिए मैं अभी इसको रन करता हूं। अभी क्या एरर आ रहा है? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। मतलब ये इंडेंटेशन एरर है। अब यहां पे अगर आप इसके जगह सिंपली अगर एक टैब प्रेस कर देंगे तो ट्रैप क्या करता है, 4 स्पेस ले लेता है ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं ओके सर। इसी कोड को रन करता हूं तो देखो रन हो गया। सर रिक्वायरमेंट क्यों होती है इसकी? सर ये रिक्वायरमेंट, ये मैंने जब स्टार्ट किया था ये सेशन, आपको मैंने एक चीज बताया था कि देयर आर सर्टेन ग्रामर रूल्स, जो कि ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के बेसिस पे वो लैंग्वेज रन करता है। करेक्ट। तो ओके। ये रूल मैंने, ये प्रोग्रामिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी जब हम नया लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सीखना, तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं उसके, कुछ लॉज होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हमको याद करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सीख जाते हैं। तो ये ओके सर। कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। इसमें नहीं होने होने का कुछ ये नहीं है। इफ यू विल डू, अगर आप इंडेंटेशन नहीं फॉलो करोगे तो आपको ये एरर देगा, तो आप कोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। ओके और सर। ये इंडेंटेशन अभी मैं बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है, ये भी मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए ये जो इंडेंटेशन का तरीका है ना, अगर आप दूसरे, अगर आपने कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ा होगा तो आप देखोगे तो ये ना थोड़ा मुश्किल तरह से था।
इसकी जगह हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, और भी कई सारी चीजें अलग अलग जगह है। बट ये इन्होंने इसको पाइथन लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई किया है। तो ये एक तरह से दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में एक तरह से सिंप्लीफिकेशन है इन्होंने। ओके। ये मैंने नहीं किया, ये क्रिएटर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज ने ऐसा किया है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं? यस ठीक, सर। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने ये समझ गए कि इंडेंटेशन एरर क्या होता है, ठीक है। अब ये जो फोर स्पेस का जो मैं बात कर रहा हूं, फोर स्पेस, तो एक चीज है पाइथन के अंदर, ये पेप, पीईपी, पेप 8, ये इसको कहते हैं, सॉरी, लेट मी राइट इट इन ए मोर एलिगेंट वे, दिस इज पेप, पीईपी 8। ये क्या है? पाइथन स्टाइल गाइड है, इसको STYL स्टाइल गाइड कहते हैं, ठीक है। ये यही हमको गाइड करता है कि फोर स्पेसेस, स्पेसेस पर इंडेंटेशन लेवल, पर इंडेंटेशन लेवल, फाइन, ठीक है। सो कंसिस्टेंट, ये स्टाइल गाइड ही इसको इंडेंटेशन का, तो ये, सो वी विल बी स्टिकिंग टू दिस style of indentation throughout our code to avoid any errors and improve. You can don't raise hand, simply just ask the question, just unmute yourself and ask questions, don't need to raise the hand, please ask. सर ये एक बार पैप 8 का क्या मीनिंग है, वो फिर से बताना सर प्लीज। ये सर पाइथन इंडेंटेशन गाइड है, ये पेप 8 जो है, पीईपी पेप 8, यही, ये एक सेट ऑफ कुछ, पेप 8 ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग पाइथन इंडेंटेशन, पाइथन स्टाइल गाइड, सॉरी, पाइथन सो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स स्टाइल देयर। गाइड, यहीं से ये इंडेंटेशन की कहानी आई है। और ये रिकमेंड करता है, दिस रिकमेंड्स यूजिंग फोर स्पेसेस, और भी कुछ चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे सर। तो सिंस हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है सर। ओके सर। तो अभी हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। ये तो सिंपल हमने समझ लिया कि ये इंडेंटेशन क्या होता है और इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। अभी सेकंड चीज हमको करना होगा, सेकंड चीज मैं करने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स, पाइथन, लेट मी राइट इट, पाइथन सिमेंटिक्स, ठीक है। अब ये पाइथन सिमेंटिक्स क्या है? सो देयर आर टू थिंग्स, व्हाट आर द टू थिंग्स? One is called statements and other is called expression. So let me write it here. Statement क्या होता है? This is very simple thing, everyone knows. अगर मैं लिखता हूं, let's say I am writing x is equal to 10. This is a statement. This type of thing is called statement. Simply मैंने x is equal to 10 लिखा। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन ये होता है, एक्सप्रेशन ये होता है, एक्सप्रेशन इज लाइक, if I write y is equal to x plus 10, this is called expression. Can you see the difference between statement and expression? So you can think of statement as tasks. You can think of this statement as tasks you ask Python to do. You ask Python to do. And the expressions, how you can think of expressions as questions you ask Python to solve. Fine. So it's like being a boss
and your quiz master at the same time. Fine. So this is very simple thing. Now let's move ahead. अभी अगला चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप. So now let's come to variables and data type. Data type. Fine. So one very important thing in Python is that we don't need to declare which type of variable it is. If you look at any other programming language, so let's say you want to define one variable which is integer, let's say. So first you have to write something like var, then you have to write int, then you have to define something. It's something like, I am not going into details about the other language because our agenda is learning Python, just to make a difference, create a difference. So, but in Python, you don't need to declare the type of variable. You don't need to declare type of variable. Fine. जैसे कि let's say if I write, let me write it in the code form so that it is good to understand with the help of code. Let's say I want to declare one variable. So let's write one variable, my underscore variable. This is a variable. And I'm assigning some value. Let's say I'm assigning 10. My underscore variable. Let's say I want to declare another variable, my underscore string. And here I am writing the name of the variable. Let's write Lokesh. Hello, Lokesh and Rahul. Fine. Let's write the name of my variable. Now, if you look, I'm simply writing one variable name here and assigning the value. If you look from your knowledge, you understand that this is integer. This is my integer. Fine. And this is a string, or if you do not know string, if you know, this is characters. So this is a different kind of variable, and this is a different kind of variable. In other languages, first you need to declare which kind of variable you are going to define. Let's say you have to put it var int, then you have to declare some variable. Then and only the language is going to understand that you have declared an integer variable. Here, in case of string, let's say you have to declare var char, then you have to declare the variable. But here, you do not need to declare the type of variable. You simply write the name of variable and whatever you want to put inside it. Please unmute yourself, mute yourself, whoever is speaking, please. So here, if you look, I have only written this, and the Python will automatically understand the type of variable, which variable is it. So this is one very important thing. So variables are like, you can say variables are like actors that can take on any role without prior notice. Now, there are certain rules for defining the variables inside the Python. So let's understand those rules. So next thing is rules for defining variables. Fine. So what are the rules for defining variable? The first rule for defining the variable is called, let's write the first rule as variable naming. So what is this variable naming? So variable naming is something like, first thing is that variable must start with a letter or underscore. This is the first.
variable, I'm writing must start with a letter or underscore, under SCORE. How can we write underscore? Underscore is written like this. This is my underscore. Now, just to understand this rule, let's write one variable VALID, valid underscore. I'm writing one variable valid underscore variable. And I'm assigning something inside it, some value, let's assign 10. And then after, I'm writing another variable underscore VALID, valid VARIABLE variable is equal to, let's say, I'm assigning 20. Now, both are fine. Why both are fine? Because what I told you, variables must start either with a letter. So here, if you look, this is starting with a letter. Or variables can start with an underscore. So if you look at this variable is starting with an underscore. So both is valid. So variables naming must start either with a letter or underscore. This is the first thing. Second rule. So who has raised hand? Please don't raise hand. Simply just unmute yourself and ask question. Interrupt me in between. Need not to raise the hand. What is the difference between this valid variable and underscore valid variable? Because I can see valid variable it's highlighting, but underscore valid variable is something like grade in both variables. So It is I it's little bit grayed and it is highlighting. Is there any difference? no, there is no difference. Variable name should not be start with underscore. No, it's written now It's underscore written, or what I have written must start with a letter or underscore. So since it is starting with a letter and this is starting with an underscore, so both are valid. If you just copy this, let's copy this and put it in a new code cell. So this is same thing, no issue, no problem. so means underscore. If you can you put underscore in first one? Okay. So means underscore variables का थोड़ा सा blur दिखता है. Yes, you can say हो that, सकता है. Maybe it's representation. but this is fine. Oh. So ये आपने काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया सर. So thanks for that, and I really appreciate your good work. So keep on doing this brilliant work. Sir, whatever we are writing here, it is case sensitive or what? Means the second third line. I'm coming to that. So first rule we have understood. Now let's understand the second rule. Second rule says variable. Second rule is about, this rule says cannot start with a number. So our variables cannot start with a number. Let me give you an example. Let's say if I'm writing 1 underscore invalid variable. This is a name. As soon as I put this 1, I am getting this red button. That means it is coming in the red color. That means there is something wrong. And if let's say if I write anything like 30 here, let's put. And if I will run this code, I will run this code, I will get everything is fine. Let's run this code. Okay, let's first save this and let's run first this code. I'm getting everything is fine. But if I run this code, I will get a syntax error, invalid decimal literal. Why this is invalid? Because this is a rule cannot start with a number. And here I am starting with a number. Fine. Now let's come to the third. So third rule says, rule number third.
variables can contain only alphanumeric characters, contain only alpha numeric characters and underscores. Fine. Let's understand this with the help of an example. So if I write, let's say, valid underscore variable underscore 2, and if I write some value here, I am writing 40. So this is fine. And if I write invalid dash variable, and if I am writing like variable is equal to 50. So this is not acceptable. This is wrong. This thing will cause index error. This will cause index error. Fine. This is valid. Why this is valid? मैंने क्या बोला? ये जो भी है वेरिएबल्स, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है. अल्फा न्यूमेरिक मतलब एंड अंडरस्कोर्स. ओनली अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर्स ही अलाउड है. बट यहां अगर आप देखेंगे मैंने डैश डाल, सो दिस इज नॉट अलाउड. तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे सिंटेक्स एरर आएगा. देखते हैं रन करके, एक बार देख ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं. अगर मैं इस कोड को, लेट्स से आई एम राइटिंग इट इन अ न्यू बॉक्स एंड फर्स्ट लेट्स रन दिस कोड. तो मेरा रो कोड रन हो गया. यहां मैं जैसे ही रन करूंगा मुझे इनवैलिड सिंटेक्स एरर, क्योंकि दिस इज नॉट करेक्ट. फाइन. तो ये चीजें हम समझ गए. नाउ इसके बाद अभी मिस्टर गौड़व पूछ रहे थे, अब मैं उसके ऊपर आता हूं. ये हमारा कौन सा रूल नंबर हो गया? 4th रूल नंबर. फोर्थ रूल नंबर ये कहता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है, लेट्स से इफ आई राइट वन वेरिएबल माय वेरिएबल and I am putting is equal to 60, and here I am writing my variable is equal to 70. Both are different variables. ये यहां पे मैंने v को कैपिटल रखा है, दिस v इज, यहां पे मैंने v को स्मॉल रखा है. यहां अपर केस में रखा है मैंने, अपर केस, और यहां v लोअर केस में है. So ये variable is different, this variable is different from this variable because variables are case sensitive. Fine. So if I run this too, I will not get any error because this is fine and variables are case sensitive. So any problem till here? सर जो आपने कमांड लिखी थी स्टार्टिंग में प्रिंट की, तो वो वो तो आई थिंक कैपिटल लेटर में काम नहीं करता, करेक्ट? वो कमांड होती है. दिस इज अ प्रिंट फंक्शन, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी. ये कैपिटल लेटर में नहीं होता, ये स्मॉल में ही होगा. ओके, ठीक है. हम लोग एक एक करके पहले रूल्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग कमांड पे भी आएंगे, ये सारी चीजें भी आएंगे. ये जो प्रिंट होता है इसको हम लोग, देखो पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेसिकली. तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ड फंक्शंस हम लोग बोलते हैं. कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनबिल्ड फंक्शंस. मतलब क्रिएटर्स ऑफ पाइथन ने उसको बिल्ड किया है. तो इनबिल्ड फंक्शन में से ये प्रिंट फंक्शन भी इनबिल्ड फंक्शन है. तो दे हैव ए सर्टेन रोल. प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? कोई भी चीज को डिस्प्ले करना, दिखाना. तो कोई भी चीज आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे, ये p आपका स्मॉल में रहेगा
और कुछ भी आप यहाँ लिखते हैं उसको वो प्रिंट करा देगा। और कुछ फंक्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मिलेंगे हमको। ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। गॉट पॉइंट, गॉट द पॉइंट गौरव? यस 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 यस। अभी हम लोग एक चीज करते हैं, सॉरी, तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड न्यू थिंग। अभी असाइनिंग वेरिएबल, असाइनिंग वैल्यूज, असाइनिंग, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, जो लोग नया नया लैंग्वेज सीखते हैं उनके लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या होता है कि मेरे Uh, मेरी just sorry to interrupt in between. Just हाँ one query. हाँ हाँ, Like you started that about the variables and data types. So I करेक्ट। understood the rules for defining the variables, like, but just I wanted to know, like, what are the variables that we are using in Python, and what are the data types that we will be talking about? So I will be discussing these things in the few, just wait for some time. Okay. So actually I will be going step by step. Okay. Done. So I will be discussing all those things, so don't worry. Done. Thank you. Is it fine for you? Yes. Yes. Thank you. Fine. See, this is assigning values. इसको क्या कहते हैं? There is, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है ये, हम लोग आम भाषा में इसको इक्वल टू समझते हैं मैथ्स में, लेकिन पाइथन में इसका थोड़ा डिफरेंट है। एंड दूसरा होता है डबल इक्वल। दिस इज कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन। व्हाट इट मीन्स कि लेट से अगर मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा, y इज इक्वल टू मैंने लेट से 50 लिखा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, और उस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू 10 असाइन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वल टू नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू इन पाइथन, दिस इज assigning a value to a variable। अभी मैंने एक दूसरा वेरिएबल y क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू 50 असाइन कर दी। एक वेरिएबल मैंने z किया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया, जिस वेरिएबल, दिस इज स्ट्रिंग वेरिएबल। दैट मीन्स दिस वेरिएबल contains this value, so that's why this is an assignment operator, and this is called equal to operator in Python। इक्वल टू ऑपरेटर। अभी मान लो x इज इक्वल टू मैंने 30 लिख दिया, या यहां हमने x यूज किया है, तो लेट्स से इसको x नहीं करते हैं, इसको कुछ और करते हैं, इसको a लिख देते हैं। लेट्स राइट a है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 20। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने a वेरिएबल्स के अंदर 20 असाइन किया, एंड एक v वेरिएबल है जिसके अंदर भी मैंने 20 असाइन किया। अभी अगर मैं a चेक करना चाहता हूं क्या a और b बराबर है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? a डबल इक्वल टू b, और हमको रिजल्ट में आएगा ट्रू। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर। अगर लेट से यहां a के 20 की जगह मैं 30 कर दूं, तो यहां पे हमको क्या आ जाएगा? फॉल्स। अभी जो भी मैंने यहां लिखा है उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माई वेरिएबल, माई अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है, दैट मीन्स आई हैव असाइंड अ वैल्यू टू दिस वेरिएबल, दैट इज 10। फाइन। लेकिन
अगर मैं यहाँ पे लेट से x इज इक्वल टू 10 लिखा एंड y इज इक्वल टू भी 10 लिख दिया, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं x डबल कि एक्स वाई बराबर है, यानी x डबल इक्वल टू वाई करता हूं और इसको रन करता हूं, तो मेरे को क्या आ रहा है? ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको चेंज कर दे रहा हूं, ये मैं 20 कर दे रहा हूं लेट सपोज। अब मैं दोबारा चेक कर रहा हूं, अभी मेरे को फॉल्स है, तो दिस इज अ इक्वल टू एंड दिस इज अ असाइनमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं ये आपको समझा दिया। चलिए, Okay, will this also work for expression? यस, Like if I say that a is equal to y plus 10 and b is also equal to y plus 10, so will it work let's for check, expression? let's check. A is equal to, sorry, Let's A is equal to what you want to write? A is y equal plus 10. to y plus 10. Fine. And then B Yeah, is equal to or same y plus 10. y plus. So let's check it. Why to believe something which we can check it out. Fine. And I let's see what I'm getting. I'm getting true. Okay, so for expression also it will work. Okay. Yes, means it works for expressions as well. देखो क्या है ना कि जब भी आपको ऐसा कोई भी डाउट्स हो तो check it out. Don't just believe ki what happens. Just check it out and Yeah. make it a habit of checking it out. Don't worry. क्या होगा? Error आएगा. Then we will see what where I am going wrong. Yeah, what things are not getting at place. So this is the way we can able to find out the right thing. Fine. Okay. Yeah, thank you. तो अभी हमने ये भी चीजें कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है, हम लोग आते हैं इक्वलिटी, ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो वी विल लुक एट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स लेटर। नाउ हियर very important concepts that we are going to discuss is data types. Data types. Fine. So what is this data type? So data types क्या होता है कि आपको बताएं कि it's something like, let's say ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं वाटर भी डाल सकता हूं, मैं मिल्क भी डाल सकता हूं, मैं मेडिसिन भी डाल सकता हूं, मैं राइस भी डाल सकता हूं, मैं दाल भी डाल सकता हूं, ठीक है, और मैं वाइन भी डाल सकता हूं। तो अभी ये कंटेनर इज माय वेरिएबल, समझ लो आप ऐसे। अब इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ भी डाल लूं, चाहे वाटर डाल लूं, मिल्क डाल लूं, ये सभी कुछ स्टोर करेगा। लेकिन कभी ये वाटर स्टोर कर रहा है, कभी ये मिल्क स्टोर कर रहा है, कभी ये मेडिसिन स्टोर कर रहा है, कभी राइस स्टोर कर रहा है, कभी दाल कर रहा है, कभी वाइन कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। इन द सेम वे वेरिएबल्स का कहानी आता है कि वेरिएबल्स कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, बट द टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर इज कॉल्ड बेसिकली द डेटा टाइप्स। किस तरह का डेटा वो स्टोर करेगा, दैट डिफाइंस इट द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल्स। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन डेटा टाइप्स। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीजर्स डेटा टाइप, और whole numbers भी is integers, या you say can say whole numbers comes under the integer, you know। तो let's say अगर मैं एक कोई वेरिएबल लिखता हूं my underscore int, this is one variable I am writing, my underscore int, and I am writing 5 here. What it means? This is my integer type of variables. Fine. अभी कैसे पता चलेगा कि ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स है? मैंने लिख तो दिया। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया, वैसे ही कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर।
उनमें से एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन का क्या काम होता है? इट गिव्स यू द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। अगर आप टाइप फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल माई इंट वेरिएबल डाला है, तो लेट्स पुट माई अंडरस्कोर इंट वेरिएबल, and if I want to check the data type of what is the data type of my variable, I will run this, it will give me int। इसका मतलब ये हुआ this is my integer variable। fine। Similarly, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर था, अभी मैं फ्लोटिंग पॉइंट भी लिख सकता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है, फ्लोट का मतलब यहाँ होता है FLOAT फ्लोट। पाइथन में फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स। फ्लोट का मतलब होता है पाइथन में डेसिमल नंबर्स। तो अभी अगर मैं लेट से माई एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूं, माई अंडरस्कोर FLOAT फ्लोट, तो इसका क्या मतलब हुआ? FLOAT फ्लोट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, और मैं इसके अंदर 5.5 डाल, और इसके बाद मैं टाइप चेक करता हूं कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है। माई अंडरस्कोर फ्लोट, if I will check the type of variable, I am getting float। Yes, sir. Please, sir. Hirak, sir, please ask। सर ये जो आपने माई इंट में पहले 5 लिख डाला है ना, और उसका टाइप आपने इंटीजर निकला, Correct, करेक्ट? correct, sir। क्या मैं इस माई इंट में अगेन फ्लोट वैल्यू अब डाल सकता हूँ, या इज इट मतलब फिक्स हो गया है इंटीजर के लिए? अभी क्या करते हैं सर, देखिए माई अंडरस्कोर इंट के अंदर मैं इक्वल टू अनोप। 6.7 डाल देता हूँ फ्लोट वैल्यू। यही आप कह रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट। अभी सो फर्स्ट टाइप में इंट एंड सेकंड टाइप, इज अ फ्लोट। सो इज इट पॉसिबल मतलब कि सेम वेरिएबल कैन होल्ड नहीं, इंटीजर एज वेल एज फ्लोट और स्ट्रिंग एनीथिंग? अगर आपने इसमें एक बार इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दिया, तो दिस विल रिमेन इंटीजर अनलेस अनटिल अनलेस कि आप इसके डेटा को चेंज नहीं करते हैं। अभी आपने चेंज कर दिया, पाइथन का एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऐसे। So ठीक है, if we change the value, data type will also get changed. करेक्ट। अभी जैसे ही आपने यहां माई इंट किया, नाउ दिस 5 विल गेट पॉप्ड आउट and it will replaced by this 6.7 and you will get the data type as float। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. हम चेक भी कर सकते हैं इसको। लेट्स चेक इट हियर, हाँ, we'll है ना? check it. लेट्स चेक इट। इसको मैंने यहाँ पे यहाँ पहले रन कर दिया। ठीक है सर। अभी आप देखो सर, पहला चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहले चेक कर रहा हूं कि अभी माई इंट वेरिएबल के अंदर डेटा क्या है हमारा। हाँ, सो लेट्स रन इट। कैन यू सी 6.7? 6.7 because it's a reassignment done. यस, इसने 5 को रिमूव करके 6.7 डाल। नो, अगर 6.7 अब फ्लोट है, तो डेफिनेटली आई विल गेट अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। Correct. जब हम डेटा कोई चेंज कर रहे हैं, तो माई अंडरस्कोर इंट इज अ फ्लोट। अब ये आ गया फ्लोट। Right, sir. Okay, करेक्ट। sir. और कोई इशू सर? ठीक। No, तो sir. Thank आगे you. बढ़ते हैं। तो Yes. ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो गया। अब अगला डेटा टाइप जो होता है, ये हम लोग कहते हैं इसको स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मतलब कैरेक्टर डेटा। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स। फाइन। और Just one query. हाँ, करेक्ट, Like earlier, we learned that the variables are case sensitive. करेक्ट। So while we are defining above that my underscore int is equal to 5, and again we are defining my underscore int is equal to 6.7. So while running the code, ideally it should give us the error, but actually it is reassigning the value. नहीं, केस सेंसिटिव का मतलब मींस डजंट मींस दैट इट विल। केस सेंसिटिव का मतलब आपने क्या समझा?
Like if I have assigned a value to a particular variable. केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि यहां मैं अगर माई अंडरस्कोर आई वहां स्मॉल था, लेट से मैंने यहाँ INT कैपिटल में लिख दिया एंड आई राइट समथिंग, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग, Yes. this means case sensitive. So this is a very different variable and this is a different variable. So if we are defining the same variable multiple times, so it will pick the last updated variable if it is Correct, same. correct. What happens is that he what happens, अभी क्या होता है कि आपने एक कंटेनर में पहले, ये वेरिएबल हमारा कंटेनर है, ठीक है, आपने पहले इस कंटेनर में डाला 5, फिर आप कह रहे हो कि भाई अभी कंटेनर में आप डाल दो क्या 5.5, तो पहले ये क्या करेगा, इस कंटेनर से इस 5 को रिमूव कर देगा और फिर इसमें ये वैल्यू असाइन कर देगा। समझ रहे हो? Yes, yes. ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसको हम लोग टेक्स्ट डेटा में बोलते हैं। अभी टेक्स्ट डेटा क्या होता है, माई एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं माई स्ट्रिंग एंड आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस वेरिएबल, कुछ भी डाल लो ना, लेट्स गिव द नेम हीरक, हीरक सर, सर, this is the name of the variable, fine. So this type of, this is a string, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल है, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल जब भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रिंग वेरिएबल को जब भी आप डिफाइन करेंगे इट शुड ऑलवेज कम आइदर इनसाइड दिस डबल कोटेशन, यहां ये नहीं होता है, सिंपल दिस, आइदर इट विल कम इनसाइड द डबल कोटेशन और इनसाइड अ सिंगल कोटेशन, बोथ इज वैलिड, या तो डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर होगा, बोथ वैलिड होगा। कभी हम लोग डबल कोटेशन का यूज करेंगे, सिंगल कोटेशन दैट वी विल सी जब वो चीजें आएगी, बट विदाउट इट दिस विल नॉट बी ए स्ट्रिंग वेरिएबल। समझ में आ गया? अब अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूं, इफ लेट्स से इफ आई चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, टाइप ऑफ टाइप, और यहां मैं माई स्ट्रिंग स्ट्रिंग करता हूं, तो मुझे क्या आता है, आई विल गेट str, दैट इज इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, करेक्ट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां समझाने वाला, लेट्स से कि मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूं माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, ये मेरा एक दूसरा वेरिएबल एंड हियर आई एम असाइनिंग समथिंग 1 2 4 5, बट इसको मैं सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन किसी से भी क्लोज कर देता हूं, फाइन। अगर मैं इसको रन करता हूं और मैं इसका टाइप चेक करूंगा, माई स्ट्रिंग 1, तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी, आई एम गेटिंग दिस एज स्ट्रिंग वेरिएबल। अभी ये समझो आप कि ये जो डेटा है, ऑल्दो ये इसके अंदर क्या है हमारा, कंप्लीटली ये इंटीजर डेटा है, बट सिंस इट इज क्लोज्ड इनसाइड दिस डबल कोटेशन इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आई हैव टू क्लोज इट विथ either a double quotation or single quotation, both will work fine, fine. So this was one very important thing. Now next thing is called Boolean data type. Let me write it here, Boolean. Boolean. What does Boolean means? Anyone can tell me, please? Anyone of you? True or false? True and false, correct.
Boolean means true and false. So if I, let's say, write some string here, let me write one string, my underscore bull. Someone has written something inside the chat. Okay, okay. So this is Boolean. Let's say I'm writing one variable, my underscore bull, BW bull. And I'm giving value true. And I want to check the type of variable, type, and I'm writing my underscore bull. तो अभी क्या होगा, इसको रन करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा इसका टाइप बुल। इसी तरह मैं अगर फॉल्स करूंगा तो भी इसके जगह, तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। ठीक है, नाउ एक और चीज मैं बताता हूं यहाँ पे। अभी मैं ये यहाँ पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट प्रिंट ये ले लेते हैं स्ट्रिंग प्रिंट टाइप टाइप। सी मैंने क्या किया, जस्ट ये आपको समझाने के लिए किया है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है। ये देखो, जब मैं टाइप चेक कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ बूल का, तो ये मुझे मिल रहा है क्लास है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टाइप ऑफ डेटा, दैट इज ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ डेटा, बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ डेटा। हम लोग क्लास वो काफी एडवांस में जाके बहुत अच्छे से समझेंगे, बट जस्ट अभी लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग के लिए, it belongs to a class of data which is a bool class. This belongs to a class of data which is a string class. इसका क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। ऐसे ही this belongs to a class of data which is float data. So this is very important too. अभी कितना टाइम हो गया, 10:30, it's almost 1.5 hours. So let's take a break, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग थोड़ा ये हो गए हैं, तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, 5 minutes break.